Most of the middle class families and above all have air conditioners. Yeah. Why can't we modify existing air conditioners and add some layer of filter on it and provide better air quality? मेरे father की तबीयत बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी. So we realized कि यार पूरे घर के लिए 6-7 एयर प्यूरिफायर्स चाहिए. हम लोग साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि आइडिया आता है तो फिर सो नहीं पाते हैं. इसलिए इसका नाम भी Sleepless. Chennai and Trichy airport and a couple of large tech parks as well. Right. So that's where we are. We can actually charge premium in West because हमारा सारा cost यहाँ पे है. Production everything is happening here. So it's like probably 12 to 15 months. Carbon capture product will be ready. That will open another market industry. Could you explain a little more? What do you really mean by carbon capture? Carbon capture not at the moment. जिंदगी में कुछ चीजों को हम ग्रांटेड बहुत लेते हैं. बचपन में अपने माँ बाप को, थोड़े बड़े हुए तो दोस्तों को, एडल्ट हो गए तो अपने बेटर हाफ को. पर जब ये सब कभी रूठ भी जाए तो हम उन्हें मना सकते हैं. पर हेल्थ का क्या? एक बार गई तो चक्कर चालू. समझ आ गया तो पानी मिनरल वाटर बॉटल का और खाने का ऑयल हेल्दी वाला. बट क्वालिटी एयर इनहेल करने के लिए कितने लोगों ने घर पे एयर प्यूरिफायर लगाया है या आपकी गाड़ियों में? ये दोनों तो फिर भी आपके कंट्रोल में है. पर कभी सोचा है मॉल्स में या ऑफिसेज में जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कैसी है? आज के जो हमारे गेस्ट है उन्होंने सिर्फ इसको सोचा ही नहीं, इसको देखा ही नहीं, इसी प्रॉब्लम पर अपना पूरा बिजनेस बनाया है. कंपनी का नाम है क्लेरको. तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम दे सॉ, हाउ आर दे फिक्सिंग इट? जानने के लिए मिलते हैं उनके को फाउंडर्स से, आयुष एंड उदयन. तो चलिए वेलकम करते हैं इनको. Hey Udayan, Ayush, welcome to Sleepless. I'm so glad that you guys took all the time, came from Bangalore. I couldn't be more happier. Thank you so much, man. Thank you so much for having us here. We've been talking about this for a while now. Absolutely. Yeah. It's been a 1 month of chase, though. Yeah, I don't know. I'm so sorry for that. I'm happy that you're here. And, there's nothing more beautiful and better to get the stories of the hustle out. And I've been following your journey. I remember talking behind that, how we first met in 2019. You don't remember that, but I do. But I really loved what you guys were doing then as well. But we're gonna uncover all these stories, your journey today. The idea that remains that the audience who is gonna be watching this, they should feel inspired. They should know what you guys are up to and what are you gonna do in the future. So without taking much time, let me just ask you the basic first question that I love starting with, which is, how did this happen? Clairco कैसे हुआ? What was the basic start of it? And more importantly, आप दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो, साथ में आए कैसे, ये जर्नी शुरू कैसे की और पार्टनर्स कैसे बने? Sure. So Govind, Udayan and I are school friends. Yeah. So we've known each other since class 5 and are fairly old now. Absolutely. So we've literally known each other all our lives. Yeah. And we've both been startup people, right? So हमें बहुत interest है, कुछ बनाना है, कुछ चालू करना है, वगैरह वगैरह. Yeah. So I had my own startups before. I was heading a company in India. It was a Tel Aviv-based company which got acquired. I had my own company which tanked. So I had seen a little bit of ups and downs, and so did he, right? So हम बात करते रहते थे कुछ ना कुछ करने में. But the starting was slightly different. So what happened is, so both Udayan and I are from this small city called Bhilai. Okay. In Chhattisgarh. So it's a fairly green sort of a city. Township is fairly green, right? Yes. So air quality वगैरह कोई सोचता ही नहीं है. Absolutely. Right? It never occurs to anyone. And what happened is my dad got a promotion. He moved to Delhi. और हम तो बहुत खुश थे. Yeah. But he suddenly developed a lot of chest pain. Okay. And उनको admit होना पड़ा hospital में. So I was like, what the hell? I took a flight, went to Delhi. And the doctor told me it's happening because of PM 2.5. And PM 2.5 is basically particulate matter 2.5. That's solid particles in the air which are so small. They're so small dust particles that we can't see, but they're very dangerous for us. They go into our lungs very deep and they can really create substantial issues for anyone's wellness. So I went to the doctor. I said, "यार अब क्या करना है इसका? Like, do we have medicines for this?" We do to a certain level, but still it's a big problem. So the best way is to have some sort of air purification. If you want to live in cities like Mumbai or Delhi, you must have an air purifier.
right? And I said, okay, chalo, ek air purifier le lete hain. This was 2017, so like 6 years ago, air purifiers were also not that popular. Now it is, but now because of Delhi and now Bombay being in the a lot of awareness has around. Around this you're talking 2017. Yes. Okay. 17 and Understood. तो तब मैंने फिर जाके एक एयर प्योरीफायर लिया, एक रेप्यूटेड ब्रांड का, एंड दैट वाज अराउंड 25K. ठीक है. Got it. तो उसके बाद भी मेरे फादर की तबीयत बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी. So we realized कि यार पूरे घर के लिए 6-7 एयर प्योरीफायर्स चाहिए, and that's going to be expensive. यार इतना महंगा क्यों है? 25,000 में अच्छा खासा स्मार्टफोन आ जाता है. Like why is this air purifier this expensive? So what I did is I just opened that air purifier. I saw that air purifier is nothing but a filter and a fan. Wow. बस इतना सिंपल है गोविंद, वो बस एक फैन और एक फिल्टर है. तो अगर हमें बेसिकली बस एयर पुश करना है फिल्टर के थ्रू, एंड द फिल्टर विल डू ऑल द मैजिक, विल क्लीन द एयर एंड स्टफ लाइक दैट, ये हम कहीं और किसी और तरीके से क्यों नहीं कर सकते? और 25,000 का क्यों होगा? 25,000 का क्यों होगा यार? It doesn't make sense, right? Absolutely yes. And most of the middle class families and above all have air conditioners. Why can't we modify existing air conditioners and add some layer of filter on it and provide better air quality? That was the first stop. और ये सोचा इसलिए क्योंकि if you think about it, that was basically kind of a eureka moment कि अच्छा ये कर सकते हैं. और आप सोचो like we can reduce the price by, we can make it 1/10 of what it is. Right? Wow. क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो हार्डवेयर है, AC है जो एयर सक करके पुश कर रहा है, राइट? सो इफ यू ऐड द फिल्टर एट द राइट प्लेस यू कैन डू इट. टेक्निकली इट्स नॉट दैट इजी बट इट इज डूएबल. अभी तो यूरेका मोमेंट आया है. आई एम प्रीटी श्योर उसके बहुत AC खराब किए. नहीं, उसके बाद यूरेका मोमेंट आने को तो we being startup people हम लोग के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि आइडिया आता है तो फिर सो नहीं पाते हैं, इसलिए इसका नाम भी Sleepless. Right, makes so much sense. We continuously keep thinking about it और माइंड में तो हम लोग $1 billion बना ही देते हैं. Ask how many $1 billion companies you have made in our heads. Right. True. But yeah, so around I think that time, so we have been friends, right? And I was working at Oyo at that time. Got it. I was in Ahmedabad heading operations for Gujarat. So he called me and told me कि यार ऐसा मैं सोच रहा हूँ, इसको कर सकते हैं क्या Oyo में? तो इनिशियली तो मैं पहले रिसर्च किया यार ये कर सकते हैं कि नहीं, AC में कैसे लगेगा एक्सेट्रा. तो we figured out कि अच्छा US में already there are companies who are doing similar stuff. So फिर ओयो में इंट्रोड्यूस किए, पायलट के लिए पिच किया, बट वहाँ पायलट तो नहीं मिला. बट आई गॉट रियली इंटरेस्टेड इन इट. तो मैं बोला यार पायलट छोड़ो, मैं आ जाता. Wow. That's pretty awesome, right? Absolutely. बिजनेस नहीं मिला लेकिन co-founder मिल गया. तो फिर वहाँ से then I moved to Bangalore and we started working on it. Like Aayush was full time because उसका वो previous startup got acquired, so he had like I can survive वाला. And some money. And I took a job and we started working on it. Okay. And this was when exactly? 2018. 2018, yeah. 2018. Okay. Yeah, so then once, long story short, basically although it will be a long story, but still. तो काफी रिसर्च किया फिर हम लोग, बिजनेस मॉडल फिगर आउट करने में बहुत धक्के खाए. We became part of Brigade Team at that time, right? Yeah. तो वहाँ पे जाके I think आयुष पहले गया वहाँ पे Brigade Team, because by that time I was not full time. He was running around and I was like शाम को आके मैं बस BN पीता था उसके साथ. But anyway, point being कि Brigade Trip में जाके I think he will be the right person to कैसे figure out हुआ. Got it. So initially actually Govind, we thought यार इसको हम B2C बना सकते हैं क्या? But बहुत लोगों से बात किया and I realized यार अभी भी मार्केट इतना मैच्योर नहीं है. Then we looked at the water purification market. वाटर प्यूरिफिकेशन बहुत बाद में B2C आया, राइट? हमारे घर में जैसे कैंट आरओ वगैरह जो है वो बहुत बाद में आया. इनिशियली इट वाज B2B आरओ सिस्टम्स, राइट? कि 5-star hotels, your offices started having RO systems, and then eventually over a decade it trickled down to everyone. Absolutely. Right? There was a point of time that no one would buy a 10 rupee water bottle, right? Absolutely. But अब तो वो सवाल नहीं उठता. We can never have tap water anymore, right? No. So definitely time आएगा कि air purification will also become a commodity. People will really want it. It will become a very regular sort of a product. Basically, clean air will become a commodity. Absolutely. Yeah. I'm sure now with all the awareness the people are having in this, what happened in Delhi and now Bombay or out of the blue or out of whichever way, but it's in the news, the top two cities. Actually,
the real data says that in India alone, 99% of the people are breathing polluted. It's not just the tier 1 cities. True. And globally also 95% plus people are polluting very bad air. WHO standards के हिसाब से अगर देखेंगे, it's like 5-6 times worse. Even in the best countries वो हालत है. If you are not doing anything about it. अगर कुछ कर रहे हैं तो obviously you are getting clean air. So that way we realized कि यार ये तो बहुत बड़ा problem है. Understood, absolutely. Right, but अभी तक monetization कैसे होगा वो सब figure out नहीं हुआ. बिल्कुल figure out नहीं हुआ था. But ये समझ में आया था कि यार अगर हम फिल्टर लगाएंगे तो एसी से हवा साफ हो सकती है. अब उसमें कॉस्ट बहुत कम है, लाइक स्टार्ट कॉस्ट नहीं है, राइट? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग हार्डवेयर यूज कर रहे हो. अगर आपको नया फैन, मोटर, सारी चीजें लगानी पड़ती, डक्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो खर्चा ज्यादा होता है, राइट? क्योंकि अब एसी है तो उसको रेट्रोफिट कर सकते हैं. तो कॉस्ट कम है तो क्या इसको हम एज अ सर्विस दे सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसको SaaS कंपनी जैसे एज अ सर्विस सेल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एडॉप्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी. सो दैट वाज द आइडिया एंड वी थॉट वी विल मेक इट नाउ B2B and work with some of the other chains. So like he said, we tried to do a pilot with Oyo, that didn't work, but cult.fit worked. Got it. And we did a pilot that went very well. Then we launched with cult.fit across the country. So the second Eureka was the clean air as a service. Yes. एक तो filter लगाएंगे, we'll convert ACs into air purifiers was the technical thing, and then the business model भी figure out हुआ eventually कि as a service करते हैं, because that marries very well into the technical requirement also कि आपको हर 2 महीने में filter change करना है, 15 दिन में clean करना है. It's better that somebody is taking accountability for that. Absolutely. And we were also monitoring air, so वो भी था hardware plus. You were giving them a monitoring service as well. That is air quality index है. Obviously नहीं तो point ही क्या हुआ. Absolutely, yeah. He bought air purifier and then it was not. People are able to see the relative difference from outside and inside. Right. Yeah, exactly. So my question to you is, cult.fit को आप लोगों ने क्या value proposition sell किया? That they got convinced कि यार लगाने का है. So basically, see, gym is a place where people are doing exercise, workout कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं. मतलब air जो होता है, they are panting and sweating, etc. So if gym air is polluted, people are going for fitness. So that will be a very synergetic thing कि अच्छा fitness वाले लोगों को आप clean air बेच रहे हो. तो that for cult.fit it was like a marketing. Did they use it as a marketing? Yeah, they displayed air quality real time in all the cult.fit. We were managing 110 cult.fits at that point of time. और उनके यहाँ पे टीवी लगा रहता था, उसमें एयर क्वालिटी दिखती थी रियल टाइम. सो दैट वाज रियली देयर, उनको चमक गया कि अच्छा ठीक है, ये तो हमारे लिए थोड़ा यूएसपी और उसके बेसिस पे हो सकता है थोड़ा मेंबरशिप फी भी बढ़ाए होंगे, आई डोंट नो, बट they were in the customer acquisition spree at that point of time, right? They were really scaling. And any key differentiator becomes the fundamental reason why customers are getting acquired as well. So truly, kudos to them and kudos to you. So that was the first big break that we got going. And we realized यार ये तो कुछ interesting हो रहा है, but we realized wrong. And that time basically we raised funds from AngelList and I came full time even finally. ये मेरे को 6 महीने से बोल रहा था कि भाई आजा घर तो चला ही लेगा, तो क्या हो गया. So I was getting married at that time. तो मेरा अंदर से मैंने डिसाइड कर लिया था, but I was like यार शादी के पहले नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर Absolutely. तलाक पहले ना आ जाए. कंपनी बात नहीं. My wife, हम लोग तो रिलेशनशिप में थे, बट जो इन-लॉज को लगता है कि यार ये तो स्टेबिलिटी, दिस इज धोखा दे रहा है ये तो, मतलब. Anyway, so मैं बोला शादी हो जाए फिर आता हूँ. तो शादी के 3 महीने बाद I joined full time. By that time fundraise हो गया तो. Super. And how much did you raise then? 50 lakhs. It was a pre-seed round. But it was enough to basically. We were making revenues by that time, तो वो था कि अपना operationally बहुत ज़्यादा burn था नहीं उस टाइम. तो वो 50 लाख से भी हमारा idea became a product and we started scaling a bit. Got it. तो वो friends and family round बहुत important था for us to get to the next level. Okay. So and so having said that, we realized यार इसको scale कर सकते हैं. So we spoke to a couple of coffee chains, etc. And we got some success there. But we were still not able to really scale a lot because operationally it was becoming a nightmare. Imagine managing so many cult.fits across the country और उसमें revenue relatively कम आ रहा था. क्योंकि छोटी spaces होते हैं, right? And who are the people who are going and providing this services? You were hiring them on full-time basis? Yes. For just them? Yes. तो operationally nightmare हो रहा था. Actually, not just for them, for everybody, but
they happened to be Yeah. the only client with like almost 90% of the revenue उनके through आता Oh था. my God. बट उस टाइम पे टेक्निकल ऑपरेशनल इशू इज ऑन द मैन पावर. सब लड़के दौड़ रहे हैं एक सिटी में 5 लड़के ऑल दैट. बट टेक्निकली व्हाट वाज हैपनिंग इज 2 मेजर इश्यूज. वन इज the moment you put additional filter on any kind of AC like split or cassette AC, Yeah. the warranty goes void, which we were not aware. Yeah. क्योंकि हमको लगता था कि यार तुमको क्या फर्क पड़ता है, मैं तो Yeah. एयर क्लीन कर रहा हूँ. बट how did we discover that कि during summer seasons when the heat load is very high like 45 and all, तो उस टाइम पे लीकेजेस होने लग गए थे एसी से. Got you. तो पूरे दिन एस्केलेशन कॉल्स और कंप्लेंट्स आते थे कि यार इधर एसी लीक हो रहा है हैदराबाद में, दिल्ली में, ये वो. तो तब हम लोग को रियलाइज हो कि और फिर वो लोग एसी टेक्नीशियन को बुलाते थे. Yeah. वी यूज्ड टू टेल देम कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ फिल्टर्स. हम बोलते थे आप फिल्टर हटा के देख लो, Yeah. फिर भी अगर लीकेज बंद नहीं हुआ मतलब हमारा इशू नहीं है. True that. बट इट वाज एक्चुअली नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फिल्टर्स एज सच. पार्शियली वो थोड़ा सा होता है बट मेनली बिकॉज इट वाज हैपनिंग एंड देन दिस गाइस वर कमिंग और बोल रहे थे कि यार ये फिल्टर हटाओ नहीं तो हम वारंटी वॉइड कर देंगे. दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि यार ये तो मतलब फंडामेंटली Sustainable. ये बिजनेस स्केल नहीं कर पाएंगे नहीं बेसिकली. चलेंगे. Got that. So तब and parallelly then we started पहले से actually it was in our mind कि यार what about large buildings like malls and offices. Yeah. वहाँ पे करते हैं तो उसके लिए हम प्रोडक्ट बिल्ड कर ही रहे थे. So this was again this is like 2019 time frame. Yeah. When we met he didn't remember but Yeah. Yeah. but yeah so because me याद रहेगा ना एस्टिमेशन आ रहा है पीछे से आप किसका चेहरा कितने लोगों का चेहरा याद रखेंगे. True that. जो जहाँ से पैसा आ रहा है उसका चला जाता है. राइट. तो एनीवे सो वो हुआ एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज दैट हमने ब्रिगेड के साथ ही आगे ओरायन मॉल इन बैंगलोर हमने पायलट किया एंड दैट गॉट सक्सेसफुल. Wow. तो वहां पे हमने स्टार्क डिफरेंस दिखा कि यार एक ओरायन मॉल का जो रेवेन्यू है Yeah. व्हाट वाज इक्विवेलेंट टू 110 कल्ट फिट एंड Wow. मार्जिन्स वर ऑलमोस्ट डबल. सो वी वर लाइक यार दिस इज द वे टू गो. Got it. Yeah. बट वो वे टू गो डिसाइड करने में हम लोग के बीच में बहुत I'm sure. हुआ था. I'm sure. बोथ ऑफ अस वर इंक्लाइंड बट हम लोग के एक्चुअली हम लोग के बीच में नहीं हुआ था. हमारे मेंटर्स जो थे ब्रिगेड में दे सेड किया तुम लोग जॉब देखो. तुम Okay. लोग छोटा स्प्लिट एसी में तो लगा नहीं पा रहे हो फिल्टर, बोल रहे हो मैं सेंट्रल एसी में लगाऊंगा. Yeah. बट एक्चुअली वहां पे वारंटी का इशू नहीं आता है बिकॉज जो सेंट्रल एसी में जहां हम लोग लगाते हैं Yeah. वो लोकल लोग बना रहे हैं. द कैरियर एंड ऑल दोस वो लोग चिल्लर वगैरह बनाते हैं तो उनको Oh. उससे इशू नहीं है. जहाँ पे कूलिंग हो रही है दैट इज बिग कंपनीज. Okay. जहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है एयर का Yeah. वो स्मॉलर लोकल पीपल है. Oh. They don't give any warranty and all. तो वहाँ पे फिर हम लोग Wow. we got lucky that way. Super way. Yeah, तो गोविंद इस टाइम पे क्या हुआ जब हम लोग पिवट कर रहे थे टू सेंट्रल एयर कंडीशनिंग मार्केट. हम ऑब्वियसली काफी कॉस्ट हुआ था वो लॉन्च करने में, राइट? बिकॉज इट्स अ सर्विस, सो ऑन डे वन व्हाटएवर वी हैव टू स्पेंड इज आवर्स. लाइक वी डोंट चार्ज द क्लाइंट, वी चार्ज देम ऑन अ मंथली और क्वार्टरली बेसिस. तो उस टाइम काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ गया था ऑन लॉन्चिंग दोस पर्टिकुलर क्लाइंट्स ऑफ आवर्स. And our revenue went to zero. The moment we decided कि अरे cult fit वाला scale नहीं होगा. Yeah. But So you to back out of the Gulfin deal, is no, it? because it was a distraction ना. We had already decided कि ये करना नहीं है. Yeah. और आधा टाइम हमारा escalation में जा रहा है. Yeah. तो हम R&D करके प्रोडक्ट डेवलप करके पायलट पे फोकस करें कि ये करें because we have limited bandwidth, right? तो And that's till a hard September, decision हाँ, to make. very That was a hard decision to make, and also what happened is, so we got some large, launches. Yeah. We had 4-5 clients lined up, all grade A real estate, superb, Yeah. developers, some of them international as well. Wow. all of them are our clients now. Yeah. But हाँ, So we've never had a churn. तो जो तब आया था वो अभी भी है सबके No. सब. No. And but उस टाइम क्या हुआ, कैश फ्लो का बहुत इश्यू हो गया था. So Yeah. thankfully we met a few people who said कि हाँ we will back you guys. So हम एक छोटा सा राउंड रेस करते 2.5 CR का. Got it. But उसके बाद everyone knows what happened. Pandemic happened, Pandemic. and those angels had cold feet, so they pulled out of the term sheet. So and they didn't pull out in one day. ऐसा नहीं कि Yeah. बैंडेड निकाल दिया. It was like कि थोड़ा every day आपका एक बैंडेड लगा रहे हैं. एक एंजल कम होता जा रहा था हर 2-3 दिन में. हर दिन ना ऐसा लगता था कि यार ये तो एक एंजल ने हमको बोला था कि यार एंड तक मैं तो रहूंगा. और जब उन्होंने भी मना कर दिया ना हम लोग को लगा यार ये तो This the job देखने चलो. नहीं जॉब हम लोग देख नहीं रहे थे. We were very committed. Love Why? Because उस टाइम पे mentally we were in stress, but we got into Forbes 30 under 30 Asia. That was a big boost. Yeah. Morally उस टाइम पे we needed that. अगर वो भी नहीं होता, Yeah. आपको सेम डे में 3 बैड न्यूज आ रहा है बट एक अच्छा न्यूज आ जाए तो यू आर लाइक चलो ठीक है. 100 के ऊपर एक बार ही पड़ जाता है. कुछ तो मैं कर रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है कि नहीं. तो
सेल्फ डाउट होता है ना, सब लोग क्वेश्चन करते क्या कर रहे हो यार, तुम लोग कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तुम्हारा, बट पायलट्स गॉट सक्सेसफुल ना, सो वहां से रेवेन्यूज आने लगे थे, सो वी डबल्ड आवर रेवेन्यू। तो हम लोग सितंबर में वी वर मेकिंग 3.5 लाख 3.5 lakhs per month with cult. That went to zero in Q3, October, November, December 19 में. January we were back to 6.5. All these pilots got converted. We were very lucky that way. मतलब if you look at that कि अगर pilots भी नहीं होते हैं, fundraise भी नहीं होता, तो ये बोलते हैं ना, you have to be at the right place at the right time, and timing is literally sometimes everything. Absolutely. So this happened with us. अगर हम एक quarter बाद करते तो pandemic में हम launch ही नहीं कर पाते. True that. Yeah. तो very high chance कि Clairco would have. And we went against everybody's advice. Yeah. No one said that. Everybody said कि यार सेंट्रल एसी में मत जाओ, तुमको कन्वर्ट करने में इतना टाइम लग जाएगा, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बनाया था एयर फिल्टर्स फॉर सेंट्रल एसी, उसका सर्टिफिकेशन कराने में 3 महीना लग जाता है। विदाउट सर्टिफिकेशन ब्रुकफील्ड में हमने जो पायलट किया है ना, आज तक हमारी जो सेल्स टीम है अभी भी, दे कांट बिलीव दिस। उनको लगता है कैसे, क्योंकि ये लोग इतने साल से 9-10 साल से हमारे जो सेल्स के रीजन हेड्स है, दे आर लाइक इन दिस इंडस्ट्री एचवैक में, वहां पे एक सर्टिफिकेट के बिना कुछ मिलता ही नहीं है। Absolutely. तो वो दे कांट बिलीव दिस कि कैसे तुमको ब्रुकफील्ड और एमआर लोगों ने टच कैसे करने दिया। क्योंकि हमने उनको सिंपल बोला था इन लोग को कि सर देखिए, if it is successful we continue, if it is not we will remove. You have nothing to And you never pay us. Only risk is that something will happen to your HVAC. कि कुछ टेक्निकली आग लग गया, कुछ हो गया, that we take full responsibility. हमने बोला कि कुछ हुआ तो we'll pay for it, although we didn't have money. And उसके बाद वो टच करने दे रहा, फिर हम लोग एंड में जाके ये बोलते सर बाय द वे आपको ये पायलट के लिए आपको 3 महीना एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा because we don't have money. तो आप सोचो ब्रुकफील्ड जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, और हम लोग एचवैक बैकग्राउंड के है भी नहीं, मुझे भी नहीं पता कि कैसे वो लोग मान गए यार। I think they believed in our dream somehow. They really backed us at that point. And if you think about it, these large companies usually do not give advances. They or pay cycle crazy होते हैं, real estate में especially. Right? But I think we got lucky. But with the clients. में बिलीव किया, बट उसमें भी बहुत सिंपल बिजनेस लेसन ये है ना कि क्योंकि हमने उनको बोला कि सर आप हमको जितना पे करोगे उसके ऊपर आप मार्कअप करके अपने टेनेंट को बेच देना। क्लीन एयर, तो उसके लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम था which they were willing to try. sort of cost center. तो इसलिए वो they were like कि चलो let's take this plunge. Absolutely. और हम लोग लिख के दे ही रहे कि कुछ हुआ तो we'll pay back. वो कहाँ से करते that's a different And we guarantee indoor air quality, right? We're the only company in the world that does that. There's no other company. All the larger ones that we hear about, no one guarantees air quality. We basically raise an invoice only once the outcome is achieved. Wow. So वो एक था, and then other thing was कि we were confident कि there will be no physical damage or any kind of technical issues because हमारे पास 1-2 पायलट किए हुए थे, सिमुलेशन किए हुए थे कि नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम, तो that leap of faith we took कि चलो ठीक है करके देखते हैं। And then pandemic was difficult, obviously lockdown में everything was closed, so people were not willing to pay but they were willing to continue. मतलब वो बोले डिस्काउंट दे दो बट हम पेमेंट अभी नहीं करेंगे। हर कोई बोल रहा था कि यार एक बार खोलने दो तब पेमेंट करेंगे। हमको 6-6 महीने बाद तक पीडीसी दे रहे थे लोग कि ये लोग चेक पेमेंट मैं कमिट कर रहा हूँ बट अभी मत डालना। यार ये क्या है? Financially we were really screwed, man. बट इसीलिए हमारा पैसा जो फरवरी का चेक डाले थे वो सब जून जुलाई में आ रहा था, इसलिए वो निकाल लिए हम लोगों टाइम। And then he took 5 lakh cash from his dad. So we really became very cognizant of every rupee that we spent. Very frugal. मतलब जो true frugal business होता है ना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। Absolutely yes. मतलब मैं गाड़ी में पेट्रोल भी फुल टैंक की जगह बोलते थे 50 रुपए का भरा। Super. So guys, one thing, all the entrepreneurs who are watching this, the learning at least that I had, which I can voice out, is sometimes luck is only about trying, and you have to just stay alive. Right? Oh, yes. One day, something or other will happen, and you do not know where the journey is starting from, where will it go, but all you want to do is stay alive, keep trying, and not give up. Right? So that's one of the biggest learning and a validation, yet again, that I'm taking from this conversation of ours so far, that you know how these two guys saw a dream, they realized there's a huge challenge in what they have actually dreamt about, and then they found a fix around it and a way to monetize it. But for that as well, they had to stick around and keep delivering the results, whichever way it came. But eventually they succeeded to fulfill the promise and fulfill the promise that they had made to themselves and to their clients. So kudos to you two. Now,
I will ask the next part of the question. In this journey, where do you think you have arrived? So, if it's a marathon that you guys are running, at the scale of 100, where are you sitting at this point of time? And if you could just add some words to explain your current growth narrative, your journey, and the traction that you've got at this point of time. I think I would answer on, we are not even at 10. Oh yeah, 100%. So not at 10. Okay. Not arrived. Very good. Yeah. Okay. Yeah. So we're still in single digits. Yeah. तेरा क्या number पता नहीं. I think, but I'd say 6 or 7, something like that. Around. Fairly early. Okay. I think we've just started. Now we're confident. Now we can say that we are hitting product market fit. Okay. अब वो बस relationship driven sales नहीं And होता. this what was the inflection point for this? That you believe that यार यहाँ पे टिक जाएंगे. यार ये अभी 6 महीने से हो रहा है. और ये भी Very recent phenomenon. नहीं, very recent phenomenon जिसमें confidence बहुत double By triple हो गया compared to 2020 maybe, so FY21 we were profitable also. Okay. And we grew like that year 4x despite all these challenges. Yeah. Although this base was low, but still we were like, because a lot of companies had shut down during this pandemic Of phase. course. In our industry also, there are a couple of more companies in indoor air quality जो बंद हो गए. Yeah. So the reason we were able to survive and grow was because of the business model that we have. कि recurring revenues है with healthy margins. Yeah. अगर हमारा वो वाला शॉर्ट टर्म माइंडसेट होता ना कि यार अभी बेचो और निकलो तो वो आता पैसा बट वो खत्म हो जाता. तो दैट आई थिंक, तो जब बिजनेस मॉडल हिट कर गया तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, दिस इज वर्किंग आउट. और फिर हमने टीम बिल्ड किया, सेल्स वगैरह करने लगे. फिर उसमें एक लर्निंग आई कि अच्छा ठीक है, बट स्टिल एयर प्यूरिफिकेशन इज ओनली लाइक गुड टू हैव सॉल्यूशन. True that. It's a necessary, it's a requirement, but it's not like people are thinking about it all the time. Yeah. But so when we look at our end customer, which is the facility managers who manage करते हैं सब buildings वगैरह, उनका day in day out जाता है operational cost कम करने में, and occupant experience improve करने में. True that. So that is their main KRS. Yes. And how to balance that, because every time you want to improve occupant experience, you have to make some expenditure. So every time you want to reduce your cost, you have to compromise on the quality what you're delivering. So we basically figured out here if we can make it a very attractive proposition कि air purification तो दे ही रहे, but we are also energy saving भी हम कर रहे हैं, and the savings pay for the air quality as well. Wow. And then some more is left which we can pass on to them. तो उनके दोनों के आरे meet हो रहे हैं. Okay. Which is a unique thing. Nobody in the world is doing this. ऐसा कोई भी, there are companies जो energy saving करते हैं, there are companies जो air purification करते हैं, और वो भी end to end कोई नहीं करता. We are the only company who is doing everything end to end. So ultimately it's like a solution as a service is what we are selling to the client. We are really full stack that way, if you think of it, right? Imagine हम आपको आपकी decarbonization journey में help कर रहे हैं. Yeah. आप energy कम use करोगे तो आपके carbon dioxide emissions कम हो जाएंगे. You of course save money, and that savings are paying for air purification for your office. Wow. Yeah. So I'll ask this question from what I could understand. There's a second stream, which is, and the promise, which is energy saving. Yeah. Could you take the audience and myself through the journey of how did this journey happen? So I can understand कि जब हम GTM ढूंढते हैं प्रोडक्ट को घुसाने के लिए, तो there's a value proposition we have to make, and there this fits in pretty well. But how did the science behind it and the competition in this landscape, how did you guys trace that? Sure. Did you feel that इसके अंदर competition था पर हम कुछ अलग करने वाले हैं, or is there any different strategy that you took? Yeah. Right. Of course, both the things coming together, it makes an amazing pitch. I believe within 2 minutes, 3 minutes, the client will understand. क्या try कर लेते हैं. But इसका origin और उसका जो current offering है, वो आप लोगों ने कैसे किया? Since you guys are coming from a very different background, then you created one thing, right? In air purification, energy saving वाला जो format है या जो concept है, जो इसका जो science है, how did that happen? Sure. So Govind, पहले समझते हैं कि हम कर भी क्यों रहे हैं. Sure. Right? Energy is super expensive, right? In office spaces, in malls, energy bills are over 1 crore very often. Yeah. Right? Per month. Absolutely, yes. Very often. And 60 to 70% of that is only air conditioning energy consumption. तो अगर आप थोड़ा भी डेल्टा ला सकते हैं एयर कंडीशनिंग की एनर्जी कंजम्पशन में, उसका ROI काफी स्ट्रांग हो सकता है. बिकॉज जो आपने बोला कि अदर कंपटीशन जो है, जो एनर्जी सेविंग देते हैं, उनका इश्यूज क्या था? अगेन फर्स्टली वो लोग सब केपेक्स मतलब अपने इक्विपमेंट बेच के निकल जाते हैं एंड बोलते हैं कि जो सेविंग आएगा आप रख लेना.
Got it. तो but the ROI for that is like more than 3-4 years. तो client को 4 साल तक वेट करना पड़ेगा कि मेरे को ROI आ रहा है. तो हमने बोला कि यार हम नहीं करेंगे ये, हम जीरो केपेक्स में करेंगे, डे 1 से ROI देंगे. That is one USP. Secondly, ज्यादातर लोग जो करते हैं वो है बहुत हेवी केपेक्स, मतलब वो चिलर जाके चेंज कर देते हैं, which is a good way to do it, but again it's so expensive. चिलर सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है एयर कंडीशनिंग का. एक बिल्डिंग में 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के चिलर्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी, राइट? तो वो आप क्लाइंट को आप 10 करोड़ का बिल दे रहे हो कि भैया सर ये लगाओ तो आपका एनर्जी सेविंग होगा, और हम करते हैं फ्यू लैक्स में हमारा वो रेडी हो जा रहा है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द सेंसर्स इन प्लेस, राइट? एंड वी नॉट चार्जिंग देम लैक्स फॉर नो रीजन. आपकी सेविंग आ गई उस मंथ 10 लाख रुपए की, तो मैं आपसे 6-7 लाख रुपए ले लूंगा. तो उसमें क्या हो रहा है? It's only after you save that money do we charge them. And how do you quantify that? So that's what. तो उसको measure करने के लिए we put controllers और energy meters वगैरह लगा के वो हम, so we are actually saving on the HVAC का जो energy, मतलब जब आप cool करते हो कोई space को, तो वो chilled water जो run करता है AC के अंदर, that is what is the main source of energy consumption. जो आपका compressor को उतना चलना पड़ता है to cool that water, and that water is running through the AC. Got it. तो उसको उसका consumption हम कम करते हैं, chilled water का consumption, which is directly translates into energy saving. Got it. तो वो हम कर रहे हैं, एंड उसमें यूएसपी फिर हमने क्या बिल्ड करा, एक तो बिजनेस मॉडल यूएसपी है, जीरो केपेक्स है, इमीडिएट आरओआई है, एंड एआई इतना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं व्हिच मेक्स इट वेरी स्मार्ट. मतलब ये ऑक्यूप 3D थर्मल इमेजिंग बेस्ड ऑक्यूपेंसी सेंसर के बेसिस में कोई नहीं कर रहा है. Understood. तो वो एक हमारा टेक मोड हो जाएगा वहाँ पे कि दिस इज आवर प्रोप्राइटरी थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बहुत कम एक्सपेंडिचर में भी जो वो चिलर चेंज करके बिना उनको 30% ही एनर्जी सेविंग हो रही है, और बिना करके 30% कर दे रहे हैं. तो उसके ऊपर अगर वो चिलर चेंज करना भी चाहे ना तो कर सकते, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव. वी डोंट, हम ये नहीं बोलते कि आप ये मत करो वो मत करो, हम बोलते हैं हम ये कर सकते हैं, आप देख लो इफ इट इज इंटरेस्टिंग. सो but Govind, there's one thing that's very important that we have to understand, that tech is a way to reach that particular goal. True that. वो टेक बनाने के लिए नहीं बना रहे. टेक फॉर द सेक ऑफ इट डजंट मेक Absolutely right. So an end client doesn't need to know कि आपने 4 amazing AI algorithms बनाई हैं जिसके कारण ऐसा हो जाता है and eventually energy saving होती है. उनको यार energy saving हो रही है ना. True that. End of story. So guys, now I have a very important question for all, both of you. हम जब अपनी जर्नी शुरू करते हैं ना एज एन एंटरप्रेन्योर, तो एक कीड़ा होता है कि यार ये सपना देख लेना है, देन वो सपना रीच होने लगता है, तो लगता है यार सपने को और बड़ा कर देते हैं, फिर और बड़ा कर देते हैं. तो माय क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक. 2025 में 2025 2030 तब तक गोल तो पक्का आपने एक्सेल पे या कहीं लिख के मैप नहीं किया होगा, बट दिमाग में एक सपना जरूर होगा. सो आई वांट टू नो 2 थिंग्स स्पेसिफिकली. 2025 में what kind of traction are you guys expecting for yourself, and what is the technological innovation that you believe that because of the current market you might have to push towards? So what is it that we can expect out of you guys in technological enhancement as well as the traction by 2025 and as a 2030 as a benchmark? Sure. So Govind, of course यार, मतलब Excel में तो है, और and we live and breathe that. उदयन तो टैटू करवाने वाला है. आप बोल रहे थे तो मैं एक्सेल का ही सोच रहा था क्या. Okay, so what is it in there? There are 2 metrics to that we have. Yeah. एक है what our top line will be or the revenue will be, or the ARR, either of the two. And the other important metric is how many lives are we touching with Clairco. And a big third metric हो गया carbon emissions also. Very important. Wow. Yeah. So because it's just coming in, and this is really going to be an important metric for us. Wow. So give or take, Clairco is touching lives of around 3 lakh people at the moment. Wow. On a daily basis. We manage a couple of malls, Chennai and Trichy Airport, and a couple of large tech parks as well. Right. So that's where we are. Next year we'll do slightly over $2 million, and I think by 2030, it's really tough to understand how we'll scale internationally this early. But we have to be. So next year we're going to Middle East.
We were just talking about it before the call. Yeah. We're launching in Dubai now, so international expansion is going to be key. This year is going to be key option because we've just launched energy. And Dubai will be a great market in that respect. Do you see there are players trying to capture the space in the international market from you guys or what you guys are doing? No, not right now. See, in the US, the market is very mature. There are very big players. Yeah. But that is attractive for us because they understand, so there the sales cycles are lower. Either they will be able to give them a cost benefit, like typically. And the US market is gigantic. Yeah. Right. We can actually charge premium in West because हमारा सारा cost यहाँ पे production everything is happening here, so it's like dollars पे you can charge, right? And Govind, एक बात ये भी है ना, जहाँ पे एनर्जी महंगी है वहाँ पे एनर्जी सेविंग और इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेस्ट का क्योंकि बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी पे सस्टेनेबिलिटी और सबको नेट जीरो पहुंचना है। यूएस इतना बड़ा पॉल्यूटर है, दे आर लाइक जैसे आप बोलोगे सस्टेनेबिलिटी वो सबके कान खड़े हो जाते हैं। क्लीन टेक इज द बिगेस्ट इन wave there. Absolutely. But coming back, 2030 में I think नंबर पुट करना तो मुश्किल है, but I think we should be probably like अभी से एटलीस्ट मुझे तो लगता है 50x growth तो होना चाहिए कम से कम। I think we'll be the top 3 players in the US at that time is what we think. Okay. What we're trying to do here in India right now, air purification में ज़्यादा players नहीं है. Energy efficiency में काफी है इंडिया में भी. But I think as a combination, this is really going to take us ahead. So air purification was good to have, like Udayan was talking about, but energy efficiency really, is an enabler for air purification adoption, at a much faster pace. And अभी currently again, just like energy saving के बारे में जो हम लोग 1-1.5 साल पहले सोचते थे, right now that way we are at a stage में हम carbon capture के बारे में सोच रहे हैं, direct air carbon capture. So I think by in the next probably 12 to 15 months, carbon capture product will be ready. That will open another market, industrial. Could you explain a little more? What do you really mean by carbon capture? Carbon capture not at the moment. Very like 10 seconds. Okay. CO2 emissions होते हैं air में, तो air में जो CO2 emissions हो रहे हैं, instead of जो है उसको how do you capture it? Okay. And process it, and you can convert it into a useful product. For example, there are chemicals etc. जो CO2 is a gas, right? तो कुछ ना कुछ reaction करके you can either convert it into limestone, CaCO3 बना सकते हैं, या amine based solutions use कर सकते हैं. There are different ways. So there are people in this space already doing something, because maybe I'm not from this space, so I might not be knowing you guys are capturing. There are businesses who have just surfaced with tech around this. Wow. Yeah. So in terms of building that tech, we're definitely behind. The kind of distribution we'll have by then, the kind of client base that we'll have by then, will really help us, acquire that market way faster. And again, why carbon capture is again the business national progression. Because we start doing energy saving, उससे carbon emissions कम हो रहे हैं. तो नेक्स्ट क्या है उनके लिए कि पीपल विल आस्क कि और मुझे कम करना है, कैसे करूं? तो डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर, और अभी सबके जो नेट जीरो गोल्स हैं फॉर ऑल द कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा, दे आर ऑल ऑफ देम आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस लाइक दिस, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता. एग्जिस्ट करता है बट अगेन दैट्स ईदर इट इज वेरी एक्सपेंसिव और वही एडॉप्शन लो है जो एयर प्यूरिफिकेशन के साथ था. तो वी आर फिगरिंग दैट आउट. तो वो प्रोडक्ट हाउ विल इट प्ले वी डोंट नो, बट अगर वो हो गया तब तो मतलब इंडस्ट्रियल एमिशंस जो होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से, वो एक बड़ा मार्केट खुल जाएगा हमारे लिए. That's a dream that you believe that 2030 में आई थिंक वी वुड बी, ऐसा हो जाएगा कि हमारे 3 बिजनेस यूनिट होंगे. एक होगा एयर प्यूरिफिकेशन, उसका एक सीईओ होगा जो एयर रन कर रहा है विद एनर्जी सेविंग जो अभी कर रहा है, और एक रहेगा कार्बन कैप्चर फॉर इंडस्ट्रियल एमिशन, एंड दैट विल 2 large business units will be running probably. Well, that's a great dream. And internationally, like globally, across probably. Govind, this is also important, not only from a decarbonization perspective, extremely important, but there's another reason. In any air-conditioned space, you need some amount of fresh air, right? Because the building is sealed. अब हम लोग 10 लोग बैठे हैं एक रूम में, तो हम भी CO2 exhale कर रहे हैं. अब उससे CO2 build-up हो जाएगा. You might have heard of sick building syndrome. वो इसीलिए होती है जब अच्छी बिल्डिंग में वेंटिलेशन नहीं होती है. लेकिन अब क्या होता है, अगर आप वेंटिलेशन अच्छा कर लो, ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर लेने लग जाओ, स्टार्ट पंपिंग इन फ्रेश एयर, दैट्स ग्रेट फॉर अस, लाइक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन बढ़ जाता है. हाँ, राइट. बट द प्रॉब्लम इज आपकी एयर कंडीशनर को और ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर कूल करना पड़ता है. Right? Imagine driving a car with the windows down and the AC on. That won't work.
एग्जैक्टली वही कारण है, अगर आप ज्यादा फ्रेश एयर ले रहे हो तो एसी बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा टू कूल दैट डाउन. लेकिन अगर आपने CO2 कैप्चर कर लिया जो हम एक्सेल कर रहे हैं, यू नीड वेरी लिटिल फ्रेश एयर. Guys, I'm feeling like amazing the kind of learning that I'm having. I'm glad that you guys have come because these are amazing and important topics to understand from not from a point of view because I'm passionate for proptech or what is happening in technology, but as a normal citizen of this world as well. That these are important phenomena. And as you spoke, कि यार पानी की purification के बारे में कहाँ हमारे मॉम डैड ने सोचा था, पर आज हमारे घरों में है. So I'm pretty sure 10 years, 15 years down the line, this will be a phenomenon. And I'm pretty sure, and I would rather root for you guys, that you guys will be coming with a solution जो हम लोग के घरों तक भी हो और पहुंचे. So with that, with this similar context, I had a very important question to ask. हमने discuss किया कि how Western markets, US market, there's a huge awareness कि आप वो sustainability word बोलो और कान खड़े हो जाते हैं. Clean tech लेके बहुत बड़ा drive चल रहा है, and it's at the top of the important areas where the investments are also coming in. Right? Absolutely. But in your journey, when you're talking to these, while acquiring your business as your clients, do you feel that same level of awareness or recognition to this problem or the zit-freeness to fix this problem and that action-oriented play? Or you feel that there's a huge amount of awareness that you have to create, and then there's a very thanda response that you first get, and then only when you prove something changes. Govind, दो चीजें हैं which is driving our business now. Number one is, so we're focused mostly on office spaces, and you want to tap these large MNCs of the world, right? Because they have millions and millions of square feet of office space, right? And all of them have decided that they will only take office spaces which have certain certifications. तो दो सर्टिफिकेशंस होते हैं. एक होता है लीड जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर है. सेकंड सर्टिफिकेशन होता है वेल, which is around wellness of the occupants. Okay. What's the air quality that we're breathing? What's the water quality? Are you providing nutritious food to your employees? How's the ergonomics of the chair you're sitting in? How's the lighting and stuff like that? Sound also. Exactly, vibration. So sound and air are the most difficult points. तो जो guidelines है और जो targets है, ये दोनों maintain करना बहुत मुश्किल है. Furniture light तो आप you can easily change and stuff like that. So air is like very or almost 15% of the credits. 29% of the credits is on air quality out of the 100. So that drives it now क्योंकि अब वो international demand है. Imagine Google, no matter what country they have an office in, they need these two certifications in those offices. Basically जहाँ पे भी expats आ रहे हैं ना, it doesn't matter आपको वो आप अफ्रीका में बैठे हो कि इंडिया में कि स्वीडन में, वो उनको WHO स्टैंडर्ड एयर they need the same indoor environment. आउटडोर एयर क्वालिटी जितना खराब होगा उस देश का उतना हमारे लिए अच्छा है. Got that. Business model. Just joking. I get that. That's an opportunity. तो हम लोग एक्चुअली बोलते हैं क्या जाओ दिवाली में फोड़ो बम, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना क्लीन करेंगे. And the second thing that's really helping us because everyone in India, and we are a very cost conscious market, right? हम बहुत ज़्यादा cost के बारे में सोचते हैं. So Clairco is far more affordable. We only charge once there's an outcome that is required. तो रिस्क फैक्टर भी कम है Clairco के साथ काम करना compared to us. जो माइंडसेट जो आपने बोला था यूएस में जैसे सस्टेनेबिलिटी इज द वर्ड व्हिच पीपल आर पेइंग अटेंशन, यहाँ पे आप उसी को घुमा के बोलो कि सर आपके पैसे बचेंगे. फिर वहाँ पे इंडिया में जैसे ही आप बोलते हो पैसे बचेंगे तो वो they are willing to do stuff. We market a lot of real estate, right? So we know it. It's a premium को भी हमें बचा के ही दिखाना पड़ता है कि how are you saving something, and that's where the conversation starts. So no doubt about that. And whenever it is about money, it's a killer conversation to carry. No doubt about that. So still, my curiosity remains. You answered कि MNCs जहाँ पे है, that becomes your GTM, right? Eventually वो Western mindset वाला ही है. मेरा personal curiosity इस चीज का है कि हम Indians जो business drive कर रहे हैं या those who are sitting in that position to take decisions, right? Like simple malls may not have similar criteria because commercial spaces I don't understand. A lot of expats might come, the MNCs which are occupying the space, उनके criteria हैं. But typical conversation of yours with your Indian the mall owners or the commercial space owner, how has that been flowing currently? Like, do you see the awareness in them or curiosity है action सामने से ले रहे हैं? देखिए malls में भी again क्या होता है कि normally malls में energy saving is a big hit. Okay, that makes sense. Cost control.
But mall में still it will not work very well with us at least because वो already under design करते हैं retail space को. Right. तो आप क्या optimize करोगे? मतलब वो wastages हैं उधर. Yeah. बट आप बहुत ज्यादा कंजम्पशन कम नहीं कर सकते बिकॉज रिटेल हाउ दे डिजाइन नॉर्मली इज दैट एंट्रेंस में वो कूलिंग अच्छी रखते हैं ताकि अंदर आते ही आपको लगे कि कहीं अच्छी जगह आया हो और बाकी के एरिया में देखो कि उतनी कूलिंग नहीं रहती तो और ये मॉल वालों ने खुद बोला हमको कि भाई मैं तुमको ऑफिस दे रहा हूँ मॉल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मॉल में क्या कर लोगे तुम मैं तो उसको चाहिए 100 रुपए में दिया ही 80 तुम 80 का 50 कर दोगे तो फिर लोग कंप्लेंट करने लग जाएंगे सो दैट इज व्हाई मॉल में थोड़ा टफ रहेगा एनर्जी ऑल्दो प्रोपोजिशन अट्रैक्टिव है बट टेक्निकली प्रैक्टिकली स्पीकिंग शायद मुश्किल होगा thankfully the market is so large in India probably next year or by the end of the year after that 1.2 billion square feet का grade A office space ही होगा grade A office space है वो हमारा जिसमें बस MNCs हैं और tech parks या SEZs तो market इंडिया का भी बहुत बड़ा है बहुत डेप्थ है and air conditioning is similar everywhere in the world तो अगर हमें कभी लगा कि ये मार्केट इंडिया का छोटा हो रहा है नहीं लगेगा अगर लगेगा तो साउथ ईस्ट एशिया है ऑस्ट्रेलिया इधर मिडिल ईस्ट है यूएस है यूरोप है मार्केट इज टू लार्ज पैरेलली ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ इट इज अबाउट कि जहां पे मार्केट है वहां जाओ उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैं पूरा कैप्चर करूंगा तभी जाएंगे मतलब वो पैरेलली कर सकते हैं ना एंड व्हाई अगेन बिकॉज़ एमएनसीज है तो दे हैव अ प्रेजेंस देयर तो वो बोलते हैं कि यार इंडिया में दे दो वहां भी कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल गुड पॉइंट फॉर एग्जांपल वी मैनेज एयर क्वालिटी अक्रॉस वी वर्क्स इन द कंट्री and we got a great introduction in UAE as well same story with MR हम MR के साथ भी काम करते हैं हमें वहाँ पे भी introduction मिली है so that helps right and MR there I'm stating that townships there that they give the central air conditioning system this thing for even their residences exactly so I was just coming to that UAE में it's not just about us every space even the school buses से लेके आपका जो गाड़ी सब कुछ एयर कंडीशन है तो अभी जो हमारा लॉन्च हो रहा है यूएई जो बोल रहे हैं जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज वन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल हम इंडिया में कुछ रेसिडेंशियल नहीं करते और पहला हमारा यूएई इज रेसिडेंशियल दैट्स ब्यूटीफुल विल नॉट टेक एनी नेम्स राइट नाउ बट एक बार कंफर्म हो जाए बट I get it, but it's beautiful. And one thing that I am able to understand out of your business is, like typically a lot of businesses, I know even my business, like we have to go and knock many doors. For you, it's going to be about those exclusive doors. If you manage to get in, the series of opportunities will be open. दुनिया भर में one of the defensibility that we have. कि आप relationship build कर लो, there are bunch of handful of people और आप अच्छी सर्विस देते रहो कोई वो switching cost इतना हाई हो जाएगा कि वो सोचे कि क्यों करना है. Brilliant. Of course, you have to keep on improving your product, but you have the carbon capture coming in as well. So whenever it comes, I believe it will. So carbon capture में simple एक लाइन में अगर बोलेंगे तो our vision is carbon emit करने की जगह capture करने लग जाए तो आपका basic problem of this is the theme of the whole decade, right? That everybody is committing to a certain timeline to get and imagine that CO2 next 3-4 decades तक ये रहे मतलब मेरे नाती पोती लोग बोलेंगे हाँ हो गया नेट जीरो अब चलो पार्टी करते हैं वर्ल्ड इज फोकस ऑन नेट जीरो बिकॉज दिस चेंजेस आर वेरी अब देख लो जोशी मठ में सिंकिंग हो रहा है मतलब बहुत एवरी अदर वीक समथिंग इज हैपनिंग जो क्लाइमेट चेंज के कारण एडवर्स इफेक्ट हो रहा है राइट तो no doubt. So guys, all the entrepreneurs, you got your learning. To all the real estate guys who are watching this, typically guys from Cushman Wakefield, JLL, Brookfield, these are the guys you better get in touch with. If this video you're not watching, we'll make sure that it reaches you one way or another. We're very good at the marketing skill sets and targeting the certain companies which we want to pay for this line. We have to pay you for it. And to all the investors, I believe the kind of TAM that they have really explained and the opportunities that will be coming in. I believe this is the place where you have to put all your money. Because, this is the theme of, it's a global theme. Like, I know there might be many causes we might be chasing, but this cause is something which is very, very important, accepted by all. And with the innovation, wish you all the luck there that, if you guys keep doing it, I'm pretty sure this could be one of the most successful interviews of this series for the future that you guys are carrying. Surely on the basis of the model that you guys are operating in. And I'm very glad. Again, and as I said, I've had a great learning today, but I still have 3 boring questions left for today's discussion. I'm not going to spare you. I know it's already quite some time in the night, but so Aayush and Udayan, the
journey that I talked about, right now, that किसी को भी funding करनी है तो यहाँ पे करें, which I really believe that your cause is terrific. I want to know, and for the audience as well, and for a lot of entrepreneurs who are watching this series, what has been your funding journey like? Typically, I met Rohit Rajput, in one of the panels in Mumbai, and he was talking about you guys, and I believe he's one of the investors with you, right? So my question is pretty simple. Typically, proptech has as everybody says, it's not a sexy space, but fortunately, clean tech becomes a little on the sexier side, where people are having the narrative that it is important hai, a scope bhi hai, and scalability bhi hai, right? Depends upon the solution you are bringing. So, my question to you: how has been your journey like? How many rejections? How many acceptance? And which are the beautiful, wonderful people who believed in you? Yeah. So, Govind, अब जाके हमारा product market fit हुआ है. Right? We are very close to really expanding it super fast. But ये सब करते करते हमने जो पहले बोला था ना कि हम हर ₹1 का हिसाब रखते हैं, वो आज भी किया. Because of that, we're now net profitable. We don't burn any money at all. Wow. Right? So there's no urgency to raise another round. Great. Till now, overall, we've raised around 7 CR. Okay. Our last round was led by Aniket Capital. We've recently also seen interest from one US proptech. We raised a very small check from them. Okay. Hopefully, they'll participate in the series in a much more stronger way. They're called Second Century Ventures. They only do proptech. Understood. And we've seen, real interest in some of these, syndicates at Let's Venture and of course at AngelList. AngelList was the place where we got the first check. जो दिन पहले बात कर रहा था. Wow. And that really kept things going. जब second time जब हमारा term sheet वापस लिया गया, that was the first wave. I think I did around 83, 84 pitches and nothing worked out at that point of time. 83, 84 pitches? Yes, it's damn. I'm sure I've हम लोग इंटरनली जोक करते हैं आज तक हम लोग का कोई मीटिंग खराब नहीं जाता है, बट फिर भी रिजेक्शन होता है. तो आपने जो बोला कितने रिजेक्शन और कितने सक्सेस मेक्स डू द मैथ. Perseverance we were talking about, I mean, this is it, right? So I think we are little stupidly optimistic. Got me. बहुत मतलब हम लोग को हर मीटिंग से निकल के लगता है कि हाँ फोड़ दिया फोड़ दिया नहीं लगता. हम लोग अभी थोड़ा उम्मीद हम लोग कम करते हैं. देयर आर सम हम लोग इस मामले में थोड़ा सा सुपरस्टिशियस है. कुछ हम लोग के ऑफिस के आसपास ऐसे जैसे मान लीजिए जूस चाय पीते हैं, वहां पे खड़े होकर हम लोग इंपॉर्टेंट बातें नहीं करते क्योंकि हमारा रहता है कि पिछले बार ये चाय पीते पीते हमने उम्मीद लगाई थी कि जो हो जाएगा कुछ नहीं होगा. यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ बकवास करेंगे, बातें नहीं करेंगे. तो अरे क्योंकि क्या होता है कि अभी क्लाइमेट टेक इंडिया में स्टार्ट हो रहा है गोविंद, ठीक है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट समझना चाह रहे हैं. उनके थीसिस रेडी नहीं है. ठीक है, और थोड़ा बहुत थीसिस है तो वो ईवी वगैरह के आसपास है, सोलर एडॉप्शन के आसपास है, जो बहुत मेन स्ट्रीम हो चुका है. 5 साल पहले ही हो गया था यार. मतलब आज क्या सोच रहे हो उसके बारे में, राइट? एनीवेज, दैट बीइंग दैट, एयर क्वालिटी के बारे में किसी वीसी के पास कोई थीसिस नहीं है. तो क्या होता है, लोग क्यूरियस होते हैं एंड हमें 2-4 मीटिंग्स के लिए एंगेज करते हैं. हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं. तो हम लोग 84 रिजेक्शंस इसीलिए और हुआ क्योंकि मीटिंग पे मीटिंग मिलता रहता था. So this 84 are unique rejections. Unique, yeah. That means for 84 to land up, you would have meetings would be like. I have an Excel sheet on this, man. हम लोग का एक इन्वेस्टर लिस्ट करके एक्सेल शीट है जिसमें 6 शीट्स हैं. शीट के अंदर this database you can publish it. Nice. नहीं, उसमें काफी सारे ऐसी चीजें लिखी है जो इन्वेस्टर्स नहीं सुनना चाहेंगे और हमारे कमेंट्स अच्छे नहीं हैं. So anyways, that being that, so at the moment where we are, अब comfortable हो गए हैं चीजें in terms of, and we have great debt options available because we are net profitable. Our bank is ready to give us credit. I'm sure. All the hardware that we make and procure for our systems are funded by this company called Grip Invest. You might know about them. Yeah, absolutely. Those folks have really been with us, man. Wow. पिछले 4 साल हम उनके साथ, हम 3 साल, कभी भी कुछ भी फंडिंग चाहिए रहती थी, they are always there for any sort of a debt instrument, multiple products they have. Wait, during that first wave जो मैं बोल रहा था, जब cash flow was an issue,
So that's when we discovered Grip. So I got a message on LinkedIn. एक बंद जो उसका co-founder है जो लिखा था स्टेल्थ मोड स्टार्टअप, तो नॉर्मली वैसे मैसेज हम लोग इग्नोर मार देते हैं कि पता नहीं क्या वो लगता है कि, बट वो इसीलिए मैं रिप्लाई किया बिकॉज ही वाज आल्सो इन ओयो, सो आई न्यू ऑफ हिम. आई डिडंट नो हिम पर्सनली, बट मैं सुना था कि कोई जेन्युइन बंदा, ऐसा नहीं कि कोई बॉट. तो उससे बात किया तो वो बोला कि भाई ये है तुमको. मैं बोला यार मेरे को शॉर्ट टर्म कैश फ्लो का इशू है, बाकी हमको कुछ नहीं पता. तो बोला मैं एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन लेकर आया हूँ. तो हमारे जितने भी एसेट्स थे जो उस टाइम पे IoT डिवाइसेस थे, दैट लिटरली वी एसेट लीज गॉट द कैश एंड दैट पेड ऑलमोस्ट फॉर 3 months ऑफ आवर कैश फ्लोज. सुपर. सो उस टाइम पे दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल 3 months. उसके बाद फिर वी स्टार्टेड विटनेसिंग दैट ग्रोथ कि लोग और इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्केल हो रहा है, पैसे आने लग रहे हैं. नाइस. बट वो नहीं होता, दैट वुड हैव बीन अगेन कि अब फिर से पापा से लेना पड़ता. नहीं वो अकाउंट क्लोज हो गया था. उसके बाद नहीं मिलेगा. तो 5 का ट्रांस लास्ट था. तो सुबह या बट हाँ. सो सेकंड पार्ट जो आपने था कि हु आर दिस इन्वेस्टर्स जो हु चोज टू बिलीव, तो बेसिकली एनिकट उस टाइम पे जब इनफैक्ट एनिकेट आल्सो हैपेंड बिकॉज़ ऑफ निकल्स. एग्जैक्टली ही वाज सीईओ ऑफ ग्रिप. तो ग्रिप में हमने ये करा. दे गॉट टू नो अबाउट अस. ग्रिप ने एनिकेट से फंड रेज करा था. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एनिकेट को. पैरेलली मेरे एक कॉलेज के एलुमनाई को भी हम लोग ने ग्रुप में बताया, तो उन्होंने भी एनिकेट से कनेक्ट कराया. तो एनिकेट ने ऐसे कोइंसिडेंटली सेम डे में 2 लोगों ने बोला कि टॉक टू क्लेरको. And at that time, because we were raising actively, we had couple of more term sheets from other investors also. Yeah, got it. But वो angel groups थे. तो Anycut immediately उन्होंने undercut किया literally बाकी investors को. आज मान लो मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग, 1 हफ्ते बाद हमारे हाथ में term sheet थी. And they are really fast investors in terms of you know getting the paperwork done and stuff like that, and the support these guys have been able to give us it has been phenomenal. And I think उस टाइम पे पैंडेमिक के कारण से थोड़ा उसमें हेल्प मिल गया, बिकॉज उस टाइम पे पीपल वर assuming कि दिस इज गोइंग टू स्टे वेरी वेरी लॉन्ग एंड कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए. एयर क्वालिटी के अराउंड इतने अवेयरनेस बढ़ गया कि वी स्टार्टेड गेटिंग इनबाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स कि क्या कर रहे हो बताओ, एयर क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ऑल दैट स्टफ. और हमने उसी टाइम कोविड वाला प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था. बहुत रूडिमेंटरी वर्जन था, बट कर दिए थे लॉन्च, क्योंकि वी आर वेरी प्रॉम्प्ट विद लॉन्चिंग एनीथिंग. हम क्या करते हैं गोविंद, पहले जाके हम एक प्रोडक्ट का आइडिया लाते हैं, वो आइडिया जाके बेचते हैं. अगर कोई क्लाइंट रेडी है उसको पे करने के लिए, I know all the entrepreneurs learn this lesson hard way, but they all do. और तभी जाके प्रोडक्ट बनाते हैं. Makes sense. The start is like you and one thing I've learned, and to all the entrepreneurs, we think too much of ourselves. That's a big problem. And then we think यार हम तो कुछ है भी नहीं, राइट? कि दूसरे लोग तो हमसे ज्यादा तोड़ होंगे, आगे बना रहे हैं, तो हम पीछे रह रहे हैं. ये एक दिन सुबह लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाम तक लगता है क्या ही कर रहे हैं. Absolutely. So क्योंकि ये लेयर दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्सट्रीम है. So basically क्या होता है ना, आई थिंक वो लॉन्ग टर्म में हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, क्योंकि हमारा विजन हमको बहुत बड़ा सही लगता है. बट इमीडिएट आज इस वीक, इस हफ्ते, इस महीने मैंने क्या किया, और फिर उसको जब देखते लगता है कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं. वो ऐसे वाली जर्नी है. It's always a roller coaster ride. लिटरली सुबह अच्छी मीटिंग जाएगी, शाम को खराब हो जाएगी, या सुबह बहुत खराब रहेगी एंड शाम तक इट्स लाइक कंप्लीटली डिफरेंट. अभी रिसेंटली लास्ट वेडनेसडे की बात है, हमारा एक पैन इंडिया लॉन्च चल रहा है अभी, जिसमें क्लाइंट एस्केलेट कर रहा था ऑपरेशनल इश्यूज के कारण एक्सेट्रा. एंड द क्लाइंट सेड कि वो हमारे सेल्स ऑपरेशन से बात नहीं करेगा, सिर्फ फाउंडर से बात करेगा. शी इज लाइक अ सीनियर गाय, सीनियर पर्सन. तो उस दिन ऐसा हुआ था कि आई वॉज गोइंग टू हैदराबाद, ही वॉज इन एन इवेंट जहाँ पे पिच करने गया था. अवर सेल्स गाय वॉज ऑन लीव बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रीजन. तो हम लोग और भी बहुत सारी चीजें हुई जो ही वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड. बट वो एक इवेंट में गया था पिच करने के लिए, जाइटेक्स करके जो दुबई में होता है, उनका रोड शो था बैंगलोर में. एंड वी वन दैट. और उसमें फिर हम लोग का भी इस साल जाइटेक्स दुबई एंड मोरक्को इज ऑल पेड, ऑल एक्सपेंसेस पेड वाला हम लोग जीत गए. प्लस वो उनका कौन सा इवेंट में सेमीफाइनलिस्ट बन गए ना. That's a big thing. So सुपर क्या नाम है? I'm forgetting that. Whatever. I'm so sorry. तो
शाम तक ही वाज लाइक कि यार वो फोटो भेज रहा है कि भाई अपन जीत गए। तो पूरा दिन ऐसा गया, ही वाज रेडी टू किल एनीबॉडी कि यार क्या हो रहा है, मतलब कंपनी में लोग खत्म हो गए क्या, कोई भी नहीं है उसको अटेंड करने के लिए, मैं यहाँ हूँ, ये वहाँ है, तुम वहाँ हो। मैं बोला भाई अब क्या So yeah, that was a crazy day. So exactly, great example, right? So everything was going horrible, and then something good happened. And the problem is doing this for long periods of time. I am sure you know them, Govind, can be a little tiring sometimes. It is tiring. But एक उसका दूसरा side भी है. It gives you hope on a very bad day. And that's what I have felt. That when I have the worst day, I feel कि कुछ तो आएगा, दिखे रहने का. Exactly. But उसका एक दूसरा side भी है. Yeah. Now we can never go to a place or a work environment जहाँ पे कोई stress ही ना हो और जहाँ पे ऊपर नहीं जाना हो, वहाँ मजा ही नहीं आएगा. We just can't do it anymore. Actually हम लोग ये कर ही रहे हैं because हमको वो चाहिए stress. मतलब वो stress नहीं है तो हम लोग इसलिए create कर देते हैं ना. अभी नहीं हमको कोई पूछ रहा है कि क्या जरूरत है भाई कार्बन कैप्चर करने का, इसी को करो, ऐसा थोड़ी होता है. No, so this learning I accepted very late. Govind, there's something else also I'd like to tell you. Sure. This might be slightly interesting. So we're talking about reducing pollution. Right? तो it doesn't make sense कि हम अपने यहाँ पे फिल्टर लगाएं और डस्ट उसमें आ जाएगा, वो जम जाएगा, उसके बाद हम नया फिल्टर ले लें और पुराना फिल्टर हम फेंक दें. That's not responsible in a way, right? Unfortunately पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है. Imagine कितने एयर प्यूरिफायर्स हैं, imagine कितने एयर कंडीशनर्स जिसमें कुछ फिल्टर्स हैं. Absolutely. वो फिल्टर्स यूजुअली वाटर वॉश होके क्लीन होते हैं. तो इमेजिन करो वो पानी भी पोल्यूट हो गया, पानी वेस्ट भी हो गया, एंड इवेंचुअली वो फिल्टर फिक जाता है इन अ लैंडफिल. That's not the right way of doing it. So this is something that we've been working on, and we're fairly proud about this. This is not a regular tile. Oh, this is PM 2.5, PM 10, and the filter media all within it, completely permanently logged into this. What are you saying? Yes. This is a proper use case for a tile, and that looks like a roaster. Yeah, coaster, regular coffee coaster. So let's look at it. If you actually look closely, you can see the fibers inside, like filter fibers. And it's made out of that wastage that you guys are. There are some other binding material also, but 87% of this is that. And right now, this is just a prototype, or you guys are working on This is an early prototype, but we're working on these tiles are M30 grade tiles, which are like fairly robust. Yeah. So we have a partner who's helped us understand this. Wow. And get this made based out of Gujarat. He's been very helpful over this. Interesting चीज ये है कि हम भी फिल्टर मेंटेन करते हैं. Right. हम पूरे साल 1.5 साल का फिल्टर वैक्यूम करके स्टोर करते हैं. We don't water wash filters. और जब वो फिल्टर का रिप्लेस होने का टाइम आ जाता है, इट्स कंज्यूमेबल, राइट? वो इवेंचुअली फिल्टर खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तो वी हैव टू रिप्लेस दैट फिल्टर. We take that filter, it's made out of polypropylene, right? So वो use हो सकता है इसमें, and we put both of them together into something. Basically, the dust also we keep collecting, because you just imagine most people what they do, filter को ले जाके, when they have to clean the filter, right? या तो water wash करते हैं या तो blower use करते हैं. Compressed air. Water wash में problem is that the filter will get damaged. वो आप ऐसा नहीं कपड़े जैसे. If you use your mask also, it comes like after 2 or 3 washes, you have to change the mask. Absolutely, yes. So water disintegrates the filter and उसकी life compromise होती है, which is not the right practice. Second practice जो है blower वाला, उसमें क्या है कि आप air handling unit से उठा के filter बाहर लाके उसी के बाहर blower चला रहे हो, तो वो dust तो वापस चला गया ना, तो क्या आपने रोका? उल्टा उसमें तो filter भी नहीं आ गई, तो जाके सीधा कॉइल में जाके आपको चोक कर रहा है. तो दैट इज नॉट द राइट वे. अरे वो हमारे लंग्स में जा रहा है. लंग्स में जा रहा है. फॉरगेट अबाउट द कॉइल. तो इसीलिए वैक्यूम क्लीन करके डस्ट हम कलेक्ट करते हैं. And then we combine it with the. And then we permanently lock it. Unless Udayan decides to powder that again. No, this is really brilliant, guys. I can hold it. It's really robust. And I'm looking forward here that what you guys make out of this. So where are we in the journey of this? This is just. So actually, these are just 2 examples. There are molds are created. We can create many things out of them, like handicraft, product line of it, toys, etc. एक थोड़ा सा क्रेजी ड्रीम है हमारा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना परफेक्ट हो जाए कि हमारे जो IoT एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, जो हमारे खुद के जो चीजें हैं, उसका जो एक्सक्लोजर है इससे बन जाए. अभी जो हमारे IoT डिवाइसेस का इंक्लोजर है, दैट इज प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन है. Okay, and that costs something. Obviously, okay.
So वो अगर हम यहीं से लेके आए तो that's a full cycle being, I think that will be pretty unbelievable. that's true full stack. Yeah, true full stack. Yeah. And internal Clairco का जो ऑपरेशन है उसका भी कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो जाएगा, राइट? तो because this is carbon Brilliant, related product guys. as well. You guys are putting out things after other, and I'm really getting inspired. And no, kudos to you guys. Like, you've taken a field, found one problem after other, and started fixing it. And this is really crazy, guys. Genuinely, and I'm going to look forward to it. I would love to see whatever help that in terms of distribution, if there's anything that we can do to help to make it a reality and a mass manufacturer kind of a phenomena. Super, guys. Brilliant. Kudos to both of you there. This is really good. Thank you. Thank you. Thanks. So typically, when all of us would have started our entrepreneurial journey, the idea is that 40 पे 45 पे तो retire हो जाना है. Right? Now into the journey, I'm like, I don't want to retire till I'm 80. Now I tell my team and my clients as well that you find me here at the age of 70 doing this, this in a better manner, improvised, but I will be doing this. Yeah, exactly. This is what it is. We were also talking. ये मेरे को बोल रहा था कि यार बुढ़ापे में क्या मतलब काम ही कर रहे होंगे यार. I know. मतलब see, vacations and breaks are fine. अगर कोई मेरे को ऐसा बोल देना कि मैं तुमको दे रहा हूँ इतने पैसे, अब काम नहीं करना है, पैसे तो मैं ले लूंगा, फिर भी काम करते रहूंगा. क्योंकि वो पागल हो जाएगा यार, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं ना प्रॉब्लम्स के बारे में. So there's a saying also कि if you don't give a man problem to solve, they will create problems. तो या तो problem solve करो या तो फिर वही है, खाली बैठ के खाली दिमाग. Because the problem we've picked up is a fairly large problem, a global problem. Sure, absolutely. And unfortunately, ये ठीक नहीं होने वाली 50, 60, 100 साल में. This is only going to get worse. Yeah. The solution, that's the reason. I see no reason now that I've understood more about you guys in terms of the depth that you guys have got into and the problem that you're really solving. Rest assured, I'm going to be a big ambassador. Wherever that I can pitch in, I'll keep pitching in, and that's a promise. And in front of the camera, without doubt, I'll keep doing that. So we really need to pay you. No. I don't mind taking money for anything, but rest assured, this is a promo, without doubt. We'll see. But no, the promise is strong, no doubt about it. So now, guys, since we have limited time, two important questions, which is a signature question of this format of Sleepless Rangers. This is an area when I ask you guys, you have to name 2 Indian startups, proptech startups, which you love or adore, or maybe you believe that they are bringing a huge change. And they have to be Indian. Yeah. I think Snaptoot is doing a kick-ass job. Yeah, this is the third time Snaptoot name has come on this show. Right? They can really disrupt that market substantially. Sure. Another company, but also he's a friend of mine. I think VGod is doing a good job. They're saving billions of liters. Abhilash, they're saving billions of liters of water. Probably quarterly now, if I'm not wrong. I'm sure. That has a huge impact. So I have a lot of respect for that. The way they've figured out their distribution network. They're looking at Middle East now, Southeast Asia as well. So I learn a lot from him every now and then. Wow. And one thing I believe, which is again common, is the Brigade Reap. Both are aligned with them as well. And वो लेकिन coincidental है. कि हम वहाँ पे थे इसलिए मिले, but the relationship is way beyond just Reap. I've heard about the story. Saurav from Bottle Raja was here, and he was reciting that narrative that you guys have there in Bangalore. It's a small mafia getting built where I think it's he's right. It's good. There's something brewing right now. हम लोग साथ में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं. So guys, this is the last part and the last section, which is very close to my heart, a signature question that I have worked very hard to make, right? And everybody who has come here on this show, they have all taken some time, but they have literally explained it with a lot of love. And because this question is of that sort, the idea is very simple. If Clairco was an individual, take us through the day of Clairco to ensure जो आप लोग का जो विजन है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है. तो वो आदमी को पूरे दिन में सुबह से उठ के रात तक क्या करना है टू मेक श्योर दैट योर विजन दैट यू आर ट्राइंग टू टारगेट वो 2025 और 2030 जो बोला ना वहां तक पहुंचेगा जरूर वो बंदा. तो क्या करेगा आज के दिन में उठ के किसी भी दिन? That's a crazy question, by the way. I know I've got this. now that the audience also would have understood this, that everybody gets a little bit of a shocker here, but yeah, it's a effort for ourselves to make sure that
बाकी लोग समझेंगे कि what are we really doing in the back the narratives to make sure ये पूरी जो hustle है हमारी वो पहुंचे उसके destination तक. So if Clairco was a person, Clairco would not get up on an alarm. Okay. Will get up on phone calls. Okay. Okay. I'm sure. And that would be at any point of time of the day. Oh yeah, and it can be crazy. Yeah. Right. After that, the first hour will be to understand where are the fires that need to be figured out and then taken care of. Absolutely. And उनमें से कौन-कौन से फायर को सोचना है के बारे में सोचना है, बाकी को छोड़ देता है. And that Clairco person will also look out the window at the pollution, जो data measure करता है. Yeah. So absolutely. that is. Yeah. So we understand that what's the air quality today across all our properties that we're managing. We see if there are any escalations that we need to look at. That will be the morning ritual. Basically, this person will get a lot of alerts. So I think that's going to be an interesting thing. Second, we'll have to look at what's going to happen in the future. That we spoke about carbon capture and stuff like that. So I think working with something like an IASC or some other some other organization or group or company that can help us build that deep tech with our expertise, with the kind of data that we already have, because we have probably the most amount of indoor air quality data in the country. Absolutely. Yes. So how can we use that? How can we leverage that to build it better? So that's a bit of a longer term thing. And how do we build that carbon capture product, which is really going to be pivotal for us in the long run? Basically, by lunch, this person will be probably putting out the fires. Also thinking about what to have for lunch. Okay. Yeah. And during lunch, it will think about the future because खाते सोचते हैं ना हम लोग. Absolutely. I think उसके बाद काफी straightforward होगा what's happening at the manufacturing side, because we've internally also become full stack. Yes. We now manufacture our filters, our air quality monitors, etc. ourselves because the costs come down substantially. Because the client we don't sell our hardware, right? The client does not pay us that. So जितना cost का कम होगा, our margins are better, we break even faster. So it's very important to keep that in control, right? So what's happening at the production side at the moment? The next stage is obviously something that all of us do. I'm sure you're an expert in. Sales. Getting the word out. Comparatively, we are a way younger company compared to larger companies like Carrier Air Conditioning and all of these larger companies. So we've thankfully partnered with them, but still उतनी बड़ी कंपनी को भी काम कराने के लिए धक्का देना पड़ता है. True that. Right? So either you're working with partners, those can be system integrators, can be large companies like JLL, CBRE, whom we partner with, or just a direct client. So I think sales is going to take some time as well. So that's how it's going to be. But what we've done at Clairco is that we usually don't do crazy hours. Usually, we don't do crazy hours. Unless there's something that really demands for it. We usually really leave the office by 7:30. Wow. Yeah. That's a privilege. We take care of that. No, lovely. No, that's a great culture to build. By the way, हम शाम को क्रिकेट भी खेलते हैं काफी वही often. बोलने वाला था, इवनिंग में क्रिकेट खेलते हैं. हाँ, तो हफ्ते में एक दो बार खेलते हैं. They are not listening. That way. So but No, that's good. That's नहीं, good. रात में आके इंटरव्यू भी देते हैं ना. That's true. No, that's very wonderfully you have taken through the journey. I could totally visualize it. You guys going through the day, and thanks for being so elaborate in terms of the way you explained it. And I'm pretty sure whichever way, whatever time span that you're working, the hustle in those hours are definitely something that you guys wake up for. And the Sleepless is a series, हम लोग भले इंटरव्यू दे रहे हैं रात को जाए, पर वो नींद कुछ टाइम के लिए नहीं आती है कि यार अगले दिन क्या करना है, यार आगे हमें कैसे इसको बेहतर बनाना है. So with that, guys, I'm really thankful to you for all the candidness that you showed today. One small question which just came in my mind. So you guys have a war room at your office, all the installations that you have done, and you're able to see the live data. All right. And I'm just wishing you that you will have lots many number of screens to operate and see those data. And I will be looking forward to see that scale as well, and someday land up at your office. And with that, wishing you super luck for the journey that you guys are on to. And truly, I'm inspired by how you have taken this ride and the number of things that you have found which are connected to each other, and you're building an ecosystem of your own, right from first part, which is the purification part of the air, then the energy saving, then the carbon capturing, and then the waste material. Say you're building those beautiful products. I'm really kicked. As I said, I'm going to root for the success of you guys.
Thanks a lot, for joining in. And to all the people who are watching this episode, please make sure that you ask your questions on the comments. I will make sure that they do comment, they do give the feedback via the Twitter and via other videos that we'll shoot with them. And thanks a lot for joining in, all the guys. I hope that you enjoyed the episode as much as I did. And we will catch up with you next Wednesday. Thanks a lot to you both. Thank you so much for having us here. Thanks. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys.